नमस्कार जय जगन्नाथ समस्त को विद्यासागर क्लासेस चैनल को समस्त को वेलकम। सो आज आम जो सीरीज टा कंटिन्यू करूले से सीरीज रो आउ गोटे आम टॉपिक रो किछटा एमसीक्यूज डिस्कशन करबा अपकमिंग नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम पई बोली जो माने एम करचोंदी सेमानक पई बोली ए सेशन टा बहुत ही हेल्पफुल रहइबो जोटा कि आमे किछटा क्वेश्चंस डिस्कस करबा अबाउट द मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग एमएसएन रो टॉपिक रे आज रो हमरो डिस्कशन रहइबो। ठीक अछि तो समस्त एक्टिवली पार्टिसिपेट करिवे आउ आमे क्वेश्चंस डिस्कशन करबा। टोटल 50 नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहउची तो समस्त पई बोली निहाती आमे ओवरऑल सब टॉपिक्स ऊपर डिस्कशन ता आज रहइबो। ठीक अछि गुड मॉर्निंग एवरीवन जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। तो स्टार्ट करबा। ओके यस जय जगन्नाथ सुचिस्मिता अन्वेषा ठीक अछि गुड मॉर्निंग। तो स्टार्ट करबा क्लास स्टार्ट करबा। चलो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन Question number 1. During the first 24 hours after an acute myocardial infarction, the nurse should closely monitor the client for which life-threatening complication. Myocardial infarction, acute myocardial infarction जोड़ा को कि हमें हार्ट अटैक बोले कहते जेते बड़े हार्ट रो मसल्स को ऑक्सीजन रो डेफिशिएंसी होची जा द्वारा कि हार्ट रो मसल टा ड्रेन आउट हो जाउची जो जहा जो को कि हमर हार्ट अटैक एज अ सिम्पटम हार्ट अटैक हमको होची हैला। So during the first 24 hours after an acute myocardial infarction, nurse should closely monitor the client. Client को बा patient को closely monitor करिया दरकार को कहेंगी कौन रिस्क रहउची जे ताको क्लोज मॉनिटरिंग दरकार होची। कार्डियक डिसरिथमियास, पेरिकार्डिटिस, वेंट्रिकुलर एन्यूरिथमी आउ ड्रेसलर्स syndrome कौन होबा आंसर ए अन्वेषा यस इट इज कार्डियक डिसरिथमियास। कार्डियक डिसरिथमियास जब इरेगुलर हार्ट बीट रहउची या फिर इरेगुलारिटी रहउची कार्डियक इलेक्ट्रिकल कंडक्शन करिवारे जेहेतु आमे जानि छे हार्ट टा होते कोन हार्ट टा होचे हमर ऑटो रिदमिक ऑटोरिदमिक रो माने कोन रहिला ऑटोरिदमिक रो माने रहिला जे निजे निजे निजर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी निजे करि परिबो आउ गोटे रिदमिक सीक्वेंस रे से करिवो हैला एमदी इरेगुलर नै रिदमिक सीक्वेंस रे करिवो तो सेही जिंसरा हम होचे हमर हार्ट फॉर व्हिच इट इज नोन एज मायोजेनिक इन नेचर करेक्ट। तो एटा हमरो जदी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी रे किछ प्रॉब्लम हेबा जो हार्ट बीट ता इरेगुलरिटी देखौची हार्ट बीट ता प्रॉपर्ली हमरो से माने प्रॉपर रिदमिक वे रे हार्ट बीट ता हो नाही ताहले सेटा होचे हमरो गोटे मेजर लाइफ थ्रेटनिंग सिम्पटम हे परिबो गोटे आउ जनरली हार्ट अटैक पेशेंट्स मानक भितर ए सब जिंसरा देखा जाय। नेक्स्ट a client with congestive heart failure is prescribed a low sodium diet. Which food should the nurse instruct the client to avoid? Fresh apples, canned soups, boiled rice, steamed vegetables. Steamed vegetables. Client has a congestive heart failure. Heart failure तार देखा जाइछि ताकू लो सोडियम डाइट नेबा पई बोली कहै जाइछि लो सोडियम डाइट काहे लो सोडियम डाइट ता करनेबा पई कहै जाइछि सिंस सोडियम रो कंसंट्रेशन ता बढ़ुछि जदि बॉडी रे ताहले हमरो ब्लड प्रेशर ता हाई रहबो ब्लड प्रेशर हाई रहिले सेडा हमरो हार्ट प्रॉब्लम बा हार्ट ऊपर हमरो मेजर इंपैक्ट पकई परिबो तो सति पई बोली लो सोडियम डाइट हमको प्रिस्क्राइब करा जाय जे कोन से हमर हार्ट पेशेंट्स मानक पई बोली which food should the nurse instruct that client to avoid कौन अवॉइड करिया दरकार फ्रेश एप्पल्स सेडा रे तो सोडियम कंसंट्रेशन नथाय हैला तो इट इज रिकमेंडेड। बॉइल्ड राइस रे मध्ये हमर सोडियम कंसंट्रेशन एते नथाय इट इज रिकमेंडेड। स्टीम वेजिटेबल्स को सिजा परिबा सेतरे किछि तो हमर सॉल्ट नथाय तो सति मैं बोली इट इज आल्सो रिकमेंडेड बट केन्ड सूप्स यस बी एवरीवन एस्पिरेंट सुचित्रा मोनालिसा सुचिस्मिता ठीक अछि अन्वेषा केन्ड सूप्स जोड़ा को सब हम मार्केट रे हमर अवेलेबल अछि इवन हमें कहबा कि हमें जो फ्रेश माने फ्रूट जूसेस हमें जते बड़े फ्रेशली ताको घरे प्रिपेयर करके खाउते दैट इज बेटर फॉर अस rather than the juices that are available in the market in packaged forms काहे ना सेटा रे जो प्रिजर्वेटिव थोड़ा का थाए सेटा रे हम सोडियम का कंसंट्रेशन अधिक थाए है ना that can be life threatening to any type of congestive heart failure patients है ना तो सेति पई बोली हमर केन सूप को अवॉइड करबा दरकार ठीक अछि वेरी गुड सामने ठीक अछि। Next question. Which of the following is a classic early symptom of left-sided heart failure?
लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर कौन हम पेरिफेरल एडिमा जुगुलर वेन डिस्टेंशन डिस्पनिया और ऑन एक्सर्शन हेपेटोमेगाली हेपेटोमेगाली यस सी अन्वेषा सी ओके ठीक अच्छे करेक्ट देख एटार होची कोन डिप्स डिप्स डिस्पनिया टंग ट्विस्टर हो जाउची एटारे डिस्पनिया हैला डिप्स डिस्पनिया एटारे होची कोन ना लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर जिते बेले होची ना it causes it causes the blood back up to the lungs जेहेतु हमरो हार्ट रो सर्कुलेशन रो लेफ्ट साइड आडको हमरो लंग्स होची तो लंग्स जदि हमरो हार्ट लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर हो जाउची ताहले हमरो पुणी औतरे लंग्स को वापस ब्लड टा पळेबो जा द्वारा कि लंग्स रे फ्लूइड रो एक्युमुलेशन बढ़िबो हैला जा द्वारा कि फ्लूइड एक्युमुलेशन बढ़िबो लंग्स रे fluid accumulation ଯେତେବେଳେ ବଢୁଛି lungs ରେ then it leads to pulmonary congestion ହେଲା ଆଉ pulmonary congestion ହେଲେ shortness of breath ଆଉ hypoxia condition ए सब conditions गुड़ा हमर सब देखा छी ठीक अछि अन्य जो सब ऑप्शंस गुड़ा दिया जाईची माने jugular vein distension peripheral edema एवडा सब होची हमर जते राइट साइड हार्ट फेलियर देखौची सेवडा होची आर सिम्पटम्स हैला ठीक थैंक यू वेरी गुड एवरीवन a client with chronic obstructive pulmonary disease should receive oxygen therapy at which flow rate to avoid suppressing the respiratory drive yes कौन हम सी कोड़ा सी पूछ सुरेखा क्वेश्चन नंबर 3 टा कौन हम क्वेश्चन नंबर 3 ए करेक्ट सुचित्रा अन्वेषा एस्पिरेंट सुचिस्मिता सौदामिनी सी सुश्री ए हवा ठीक अछि ए हवा देखो कौन होची एरी जते बेले गोटे गोटे पेशेंट सीओपीडी रे सफर करछि ना सीओपीडी रे सफर करछि तो सी तारे तापदार हाइपोक्सिक ड्राइव रे से बहुत अधिक रिलाई करूछि एज माने ऑक्सीजन रो फ्लो रेट टा तार कमी जाउछि ठीक अछि कमी जाउछि तो एते की तो हमर रहिया दरकार फ्लो रेट ठीक नेक्स्ट which position is most appropriate for a client experiencing an acute asthma attack which position is appropriate for client experiencing an acute asthma attack asthma ta kon asthma ta jeta हमरा inflammation hi jaye inflammation of bronchioles due to any एलर्जी जो जदि हमर ये होची तो एटा को पोजीशन रे हमर जदि जो गोटे पेशेंट जदि एक्यूट अस्थमा अटैक सफर करूची को पोजीशन रे सबटो बेस्ट पोजीशन रजत यस इट इज हाई फाउलर्स पोजीशन और हाई फाउलर्स पोजीशन हमर केते थिला हाई फाउलर्स पोजीशन केते डिग्री सेल्सियस केते डिग्री रे रहउथला हाई फाउलर्स पोजीशन माने सिटिंग अपराइट 90 डिग्री सेल्सियस लिखुचे 90 डिग्री एंगल रे हमर बसबा दरकार जा द्वारा कि ग्रेविटी को यूज करी लोअर करिवो डायफ्राम allowing maximum lung expansion and ease the physical activity of breathing
is the physical activity of breathing. बुझियाला 90 degree. Yes. Next, a client returns from surgery with a chest tube connected to a water seal drainage system. Continuous bubbling in the water seal chamber indicates normal functioning of the system. An air leak in the system, resolution of pneumothorax, oh, tube blockage. Yes. Yes, yes. Sorry for the disturbance. ठीक ଅଛି କୁହ audible ଏବେ B हाँ एयर लीक होची हला जतरे बबलिंग होची कंटीन्यूअस बबलिंग हबो वाटर सील चैम्बर रे ता माने होची एयर लीक हेची कोठी ना कोठी फिर हला चलो नेक्स्ट क्वेश्चन arterial blood gas results show pH 7.30 PCO2 50 mmHg HCO3 24 MEq per liter. This indicates metabolic acidosis, metabolic alkalosis, respiratory acidosis, respiratory alkalosis. कौन हम yes B Rajat alkalosis C सुचिस्मिता acidosis ठीक है C हाँ C acidosis है ना कहीं आमर 7.35 रु 7.45 ता हमें कोचे नॉर्मल बोली ता तळगु रही छे एटा तो एटा एसिडोसिस इंडिकेट करूची 50 mmHg जेतबे हमें 35 टू 40 mmHg एटा होचे हम नॉर्मल ना नॉर्मल ता ऊपर एटा रहिला तो हमर कार्बन डाइऑक्साइड रो कंसंट्रेशन बढ़ुची बोली कहूचे तो कार्बन डाइऑक्साइड रो कंसंट्रेशन बढ़ुची बोली कहले एसिडिक 24 MEq per liter बोली कहले एटा मध्ये हमर एसिडोसिस को इंडिकेट करचे सिंस 22 टू 20 FCO3 कंसंट्रेशन एटा चलो ठीक अछि फिर भी एटा ठीक अछि फिर भी हला ना तो एटा टाइम बोली न हे पारि रीजन काहे ना 22 टू 26 MEq per liter होची नॉर्मल दा तो हमर एटा ए कंडीशन ना हमर एसिडोसिस को इंडिकेट करचे तो एटा एसिडोसिस हिचबो यस नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 which diet is most appropriate for a client with peptic ulcer disease peptic ulcer disease spicy high fiber diet small frequent bland meals large meals with high fat content nil by mouth permanently jaha ko almost practical based questions Rajalakshmi बाकी practical based questions ऊपर मध्ये हमें coming sessions रे discussion करिबा एटा तमर theory portion रो question ना medical surgical nursing रो questions गुडा को हैला majorly हमें theoretical portion ऊपर ही एबे discussion चली छी next coming week आडो को we will be trying to incorporate the questions from the practical skills as ठीक अछि तो एटा कोन जदि जहा को पेप्टिक अल्सर हेची सबुडो appropriate diet ता हमें ताको spicy खाना थोड़ी देबा हैला कि लार्ज मील विथ हाई फैट कंटेंट ताको तो डाइजेशन करियारे अब्जॉर्प्शन करियारे प्रॉब्लम हबो मील बाय माउथ परमानेंटली कोन भोक शोष रे थोड़ी मारियो हैला स्मॉल फ्रीक्वेंट और ब्लांड मील्स रे हमें ताको सिजा परिवा एडा को सब ही दिया जाय और अल्प अल्प मात्रा के दिया जाय बिकॉज़ द बॉडी इज नाउ नॉट प्रॉपर्ली माने एते से ये भी नीचे हमरो ये कर परिबो हैला एक्सेप्ट कर परिबो या फिर से डाइजेस्ट करिया अब्जॉर्ब कर परिबो ठीक
client with liver cirrhosis develops ascites. Which nursing intervention is most important? Liver cirrhosis ହେଇଛି liver cirrhosis ହେଇଛି ତ କଣ କରିବ develop ascites. Yes, ascites. Which nursing intervention is most important? To measure the abdominal girth daily. Yes, okay, to measure the abdominal girth daily. एटा हे जबो हमरा करेक्ट. Then next jiba question. Chalo, question number 10. Which laboratory finding is most indicative of acute pancreatitis? Acute pancreatitis. Pancreatitis माने inflammation ही जाउची जते बेले pancreas being a mesocrine gland कि हमर exocrine property भी देखौची endocrine property भी देखौची जते बेले हमर pancreas रे कोन से प्रकार infection होची बा तार inflammation ही जाउची then it leads to सेटा तापर हमर धीरे धीरे लीड करूची जाई गिरी हमर एडा पई बोली ना हमर हार्मोनल कंट्रोल भल से ही परिबो ना हमर एंजाइमेटिक रिलीज ता प्रॉपर्ली हे पाइ ठीक अछि तो एडा एमिति मझी मझी हे रहउची दैट विल लीड टू yes elevated serum amylase and lipase है ना elevated serum amylase and lipase since the amara pancreatic functions उडाको exocrine और endocrine both the property देखौची तो सते पई बोली it will lead to major effects है ना major effects निहाती देखाइबो बॉडी. Next, a client with acute cholecystititis typically report pain radiating to left shoulder, right shoulder or scapula, groin, lower back. Yes, वहाँ avoid our question answer. Left shoulder, right shoulder, scapula, groin, lower back. Cholecystititis माने कौन? Cholecystititis माने होची inflammation of the gallbladder. Inflammation of the gallbladder जोटा कि कौन करिवो जोटा कि irritates the local peritoneum and the diaphragm. कोडी पेन होए जनरली phrenic nerve रे जनरली पेन होए phrenic nerve रे जनरली पेन हुए जोटा कि C3 रो C5 जाय एक्सटेंड C3 रो C5 जाय एक्सटेंड करछि जोटा कि हमर राइट शोल्डर बा स्कैपुला को हमर अफेक्ट करे राइट शोल्डर बा स्कैपुला को अफेक्ट करे. नेक्स्ट, a client with chronic kidney disease should be instructed to limit intake of which of the following? Chronic kidney disease ताको मेजरली देखा जाउची तो ताको से को प्रकार डाइट ताको लिमिट करिया पड़िबो तो को प्रकार डाइट से ताको अवॉइड करिया पड़िबो. Potassium rich food, carbohydrate, fat soluble vitamin, fiber. Yes, যেতবে क्रोनिक किडनी डिजीज ହେଇଛି ତା ମାନେ ଆମର बॉडी रे फिल्ट्रेशन आ यूरिनेशन ये सब जिनसना मेजरली अफेक्ट पकोची तो पोटेशियम रिच फूड को ताको अवॉइड करिया को पड़िबो व्हिच कैन जदी पोटेशियम से सिवियर इंटेक करूची बिकॉज़ सिवियर intake of potassium severe intake of potassium may lead to severe hyperkalemia. ठीक अछि तो सिवियर हाइपरकालेमिया को लीड करूची बोली कहले से सेडा को लीड करूची बोली कहले तापर से कोन हबो रिजल्टेंट it will make the kidney functioning difficult. ठीक अछि potassium rich foods. Next,
Which assessment finding indicates a patent arteriovenosus AV fistula in a hemodialysis client? Absence of thrill and root, presence of thrill and root, cold extremity, cyanosis of the limb. Yes. एबी फिस्टुला रे जदि लगा होउची गोटे हेमोडायलिसिस पेशेंट रे ताले सेडा हमरो कोन रहिबा दरकार एबी फिस्टुला भितर सबिता बी अन्वेषा बी यस बी प्रेजेंस ऑफ थ्रिल एंड रूट थ्रिल ऑफ रूट करूची कोन एक्चुअली थ्रिल थ्रिल कोन करूची इट इज द फिजिकल वाइब्रेशन it is a physical vibration that you can feel or palpate that you can feel or palpate over the access site. ठीक आउ ब्रूट रो काम कोन ब्रूट रो काम हैला इट इज द swishing or rushing sound swishing or rushing sound that you can hear hear को कौन कहा जाउची auscultate yes that you can hear or auscultate using a stethoscope correct yes the answer will be B presence of thrill and root or thrill of root ro functions guda ko mane लिखे देखि देले करू चंदी कोन thrill of root हैला yes root auscultation a client with benign prostatic hyperplasia has an indwelling catheter the nurse should be alert to which early complication after the catheter removal hematuria urinary retention polyuria glycosuria benign prostatic hyperplasia prostate gland रे किसी प्रॉब्लम थिला जोडा की ट्रीटमेंट करिला परे ताको कैथेटर लगा हेतिला वंस कैथेटर टा रिमूव हे गला परे को जिंस पई बोली नर्स टा को टिके केयरफुल रहबा को पड़िबो को कॉम्प्लिकेशन टा लीड करि परिबो हमर कैथेटर रिमूव हला परे हेमाचुरिया यूरिनरी रिटेंशन पॉलीयूरिया ग्लाइकोसूरिया कोन हबो ए शुभश्री बी स्वयं सुचिस्मिता बी यूरिनरी रिटेंशन माने इफ the urine is getting removed naturally or not or the urine is getting retained in the bladder से जिनसटा को देखियो पड़िबो बिकॉज़ पूर्वरु कैथेटर लागितिला से रूट रे हम यूरिन का पास हे करथिला किंतु एबे कैथेटर रिमूव हला परे कोन जे तार इफेक्ट पकोछि सेडा को टिके केयरफुल रहबो पड़िबो हेमाचुरिया रो माने होछि कोन हेमाटोरिया रो माने हला blood in the urine the presence of blood in the urine polyuria माने होछि माने frequent urination and excessive urination है ना frequent and excessive urination है ना ग्लाइकोसूरिया रो माने होची presence of glucose in urine है ना अच्छा आ गोटे मते कोन कंडीशन अछि कीटोनुरिया glomerulonephritis एबडा मध्ये हमर गोटे गोटे किडनी रिलेटेड इश्यूज गुडा कहि कीटोनुरिया रो माने हला प्रेजेंस ऑफ ketone bodies in urine है ना glomerulonephritis रो माने होची the presence the inflammation of glomerulus inflammation है ना glomerulonephritis आ गोटे मते कंडीशन अछि खाली नेफ्रिटिटाइटिस सेडा होची inflammation of nephron है ना देन अच्छा
चलो एबे नेक्स्ट क्वेश्चन जेबा क्वेश्चन नंबर 15 व्हिच इज एन अर्ली साइन ऑफ डायबिटिक कीटोएसिडोसिस डीकेए डायबिटिक कीटोएसिडोसिस यस का स्मॉल रेस्पिरेशंस एटा केते बेले होची जते बेले हमर कीटोएसिडोसिस डायबिटीज रे कीटोएसिडोसिस जो डायबिटीज होची ता माने कीटोन बॉडीज रो नंबर कीटोन बॉडी रो सिक्रेशन ता बढ़ी जाए बॉडी रे हैला प्रेजेंस ऑफ ketone body in the body हैला ketone body रो प्रेजेंस जते बेले बढ़ी जाउची बॉडी रे सेते बेले से कोन होउची सेते बेले इट लीड टू डीप एंड साइन ब्रेथ deep and sighing breaths. How deep and sighing breath will lead? How it a deep breath हमें काहे नहीं नोचू to eliminate more and more of carbon dioxide to eliminate carbon dioxide from the body हैला तो carbon dioxide remove हेले जाय कि ना हम बॉडी स्टेबल हे परिबो सेते काहे बोली deep breath हमें नोचू हैला सेटा लीड करछि का small respirations सेटा लीड करछि का small respirations so deep and sighing breaths due to the presence of ketone bodies in the body to eliminate the carbon dioxide concentration in the body से जो respiration तक हमरो का small breath बोली का small respirations बोली कह जाउछि a client with diabetes 1 develops sweating tremor and confusion the nurse should first कौन करिवो स्वेटिंग हला ट्रेमर हला कंफ्यूजन हला एवडा का सब कोन एवडा का सब हमरो डायबिटीज जो हमर आसुची हला एडा हमरो हाइपोग्लाइकोपेनिया कंडीशन को डिनोट करछ हाइपोग्लाइकोपेनिया कंडीशन को डिनोट करछ जोटा कि गोटे न्यूरोलॉजिकली अफेक्ट करिवो बॉडी को न्यूरोलॉजिकली अफेक्ट करिवो बॉडी ठीक अछि तो सेते पई बोली से कंडीशन रे हमें कोन कर परबा कि 15 to 20 ग्राम ऑफ फास्ट एक्टिंग कार्बोहाइड्रेट कंसंट्रेशन ता जदी बॉडी रे बढ़ी जाउची इट विल लीड टू माने संगे संगे एनर्जी दे दबो बॉडी को एज अ रिजल्ट ऑफ व्हिच सिंपल होबो हैला ता बॉडी ता स्टेबल हे परिबो हैला एग्जाम लागि नर्वस लागुची टिके तो नर्वस लागिया कथा जे कोन से एग्जाम हो टिके नर्वसनेस ता रहिबा कथा इट इज अ गुड नर्वसनेस कहि परिबी हैला तो तुम जब नर्वस हो तो मैंने यू सीरियस है ना मैंने यू सीरियस तो इट्स ओके इतनी नर्वस तो रहिया दरकार किछ असुविधा नहीं a client with thyroid storm may present with all of the following except high fever tachycardia bradycardia restlessness client with thyroid storm may present with all of the following except thyroid storm जाग होई थिबो से सब देखैबो किंतु गोटे जिंसडे देखैबो नाही कोन सही ना yes see bradycardia very good bradycardia thyroid storm माने हैला thyroid ता जेतरा हमर बॉडी रे बॉडी जाय thyroid रो concentration thyroid hormones रो concentration हैला to be very precise बॉडी जाय हैला किंतु bradycardia रो माने हैला तो लो हार्ट रेट जोटा कि हमर गोटे हाइपोथायरॉइडिज्म रो सिम्पटम गोटे ठीक अछि अच्छा तो एडा को जदी हमें देखिबा हमें ए कॉन्टेक्स्ट रे बुझिबा जे थायराइड हार्मोन्स जते बड़ा लेवल लो हे जाय तारो जोडा को भी हमर हाइपोथायरॉइडिज्म बोली कहा जाउची से जिनसडा चाइल्डहुड रे हेले कोन कहा जाउची अडल्ट मन करे हेले कोन कहा जाउची
चाइल्डहुड रे हेले कोन कुआ जाउची अडल्ट मानक रे हेले कोन कुआ जाउची चाइल्डहुड रे हाइपोथायराइडिक कंडीशन को हमर क्रिटिनिज्म बोली कुआ जाउची आ अडल्टहुड रे हमर हाइपोथायराइडिज्म कंडीशन को माइक्सिडेमा हैला माइक्सिडेमा बोली कुआ जाउची हाइपरथायराइडिज्म केस रे कंडीशन देखा जाउची सेटा को हमर ग्रेव्स डिजीज बोली कुआ जाउची ग्रेव्स डिजीज बोली कुआ जाउची आ आर मेजर सिम्पटम हैला प्रोट्रूडिंग आईज प्रोट्रूडिंग आईज आ एटा को सेति पई बोली हमर एक्सोफ्थाल्मिक एक्सोफ्थाल्मिक गोइटर बोली कुआ जाउची हैला आउ गोटे मधे कंडीशन रे अछि जोडा को कहला गोइटर बा सिंपल गोइटर एटा रे जते बेले हमर आयोडीन डेफिशिएंसी होउची causes iodine deficiency होची बॉडी रे it will cause the inflammation of thyroid gland inflammation of the thyroid gland हैला तो ये हमरो एवडा सब रहि गला नेक्स्ट a client with Addison's disease is at risk for which electrolyte imbalance Addison's disease जाको होईची कहबो Addison's disease ता केते बडे कॉज होची अगर देखो Addison's disease is caused due to the deficiency of corticotropic hormones आ corticotropic hormones भीतर के आसी गले गोटे आसी गला mineralocorticoid which is aldosterone आ गोटे आसी गला glucocorticoid which is cortisol adrenal gland रो cortex region रो एटा रिलीज होची adrenal gland रो cortex region रो एटा रिलीज होची करेक्ट हैला तो ए सब हमर जो देखा जाउची हां ठीक तो ए हबो हाइपरकालेमिया एंड हाइपोनेट्रेमिया हैला हाइपरकालेमिया रो माने हैला हाई पोटेशियम लेवल हैला आ हाइपोनेट्रेमिया रो माने हैला लो सोडियम लेवल जेहेतु हमर ए जो कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन्स गुडा को ए माने हमर सोडियम पोटेशियम बैलेंस को मेंटेन करके रखन हम बॉडी रे तो सेहि में बोली ए सब लेवल रे जते बेले हमर प्रॉब्लम हुए एडिसन्स डिजीज जते बेले हुए तो सेते बेले हमर सोडियम पोटेशियम बैलेंस ता बॉडी रे हमर डिस्टर्ब होची हैला डिस्टर्ब होची नेक्स्ट the nurse uses the mnemonic fast to assess the early signs of a stroke what does the letter A stand for what does the letter A stands for H arm weakness airway anxiety fast जो हमर mnemonic ता यूज होची fast mnemonic रो माने कोन हैला fast mnemonic हमर कोन डिनोट करची F रो माने हैला face drooping A रो माने हैला arm weakness S रो माने हैला speech difficulty T रो माने हैला time to call emergency
सर्विसेस इमरजेंसी सर्विसेस है आमर आर्म वीकनेस को आउ ड्रिफ्ट बोली आर्म ड्रिफ्ट बोली है तो यहीटा आमर कौन हो कि सी कौन कौन बी हम शुभश्री अन्वेषा ठीक अच्छे आर्म वीकनेस है आर्म वीकनेस डन चलो नेक्स्ट क्वेश्चन which finding indicates increased intracranial pressure in an adult increased intracranial pressure in an adult intracranial pressure in adult এটা ডিনোট করছে আমরা কোন ব্র্যাডিকার্ডিয়া এন্ড ওয়াইডেনিং পালস প্রেসার ব্র্যাডিকার্ডিয়া এন্ড ওয়াইডেনিং ব্লাড প্রেসার ট্যাকিকার্ডিয়া মানে কোন র‍্যাপিড এন্ড ফাস্ট हार्ट रेट हाइपोटेंशन माने होची लो ब्लड प्रेशर लो ब्लड प्रेशर है हाइपोग्लाइसेमिया होची कोन हाइपोग्लाइसेमिया माने होची ना the glucose level is reduced in the blood है the reduced level of glucose in the blood है increased urine output only ठीक अछि एटा ब्रैडिकार्डिया एंड वाइडनिंग ऑफ द पल्स प्रेशर है नेक्स्ट what is the priority nursing action during a generalized tonic clonic seizure generalized tonic clonic seizure tonic clonic seizure देला बेलो को कोन करबा दरकार पेशेंट को साइड को टर्न कर देबा दरकार सो दैट द पेशेंट का हमरो इंजुरी न हो हैला पेशेंट को इंजुरी न हो तो प्रोटेक्ट द क्लाइंट फ्रॉम इंजुरी एंड टर्न टू द साइट protect the client from injury and turn to the site C will be the correct answer next a client with a spinal cord injury above T6 develops a pounding headache severe hypertension and bradycardia after bladder distension this is a characteristic of spinal shock autonomic dysreflexia neurogenic shock postural hypertension client with spinal cord injury है ताको headache होची severe hypertension high bp bradycardia माने slow heart rate how after bladder distension bladder removal this is a characteristic of dysreflexia hyperreflexia बोले मते कहा जाउची hyperreflexia generally हबो b yes question number 23 which is the earliest sign of compartment syndrome in a client with a fractured limb which is the earliest sign of compartment syndrome in a client with fractured limb absent pulse pallor severe unrelenting pain out of proportion paralysis कौन होगा yes it is severe unrelenting pain out of proportion see very good everyone chalo next question jiba Buck's traction is primarily used for fracture of the humerus temporary immobilization before the hip surgery fracture of the mandible fracture of the clavicle कौन हबो Buck's traction केतेबेले दिया जाउची केतेबेले यूज करा जाउची Buck's traction का हमर जनरली हिप सर्जरी टाइम रे यूज करा जाउची हला हिप सर्जरी पूर्व यूज करा जाउची टेम्पररी इमोबिलाइजेशन टेम्पररीली से जगह को नम करके रखिबा पई बोली या फिर मूवमेंट ता न देखिबा हला it is b yes b हला टेम्पररी इमोबिलाइजेशन बिफोर द हिप सर्जरी नेक्स्ट क्वेश्चन which instruction is most important for a client on long term corticosteroid therapy to prevent the osteoporosis रो माने कोन osteoporosis जेते बेले हमर bone density is lowered तो जेते बेले osteoporosis होची तो सेते बेले हम कोन रिकमेंड करा जाउची ताको प्रॉपर कैल्शियम और विटामिन डी इनटेक तो रिकमेंड करा जाउची जेहेतु विटामिन डी हमर सनलाइट रो सोर्स रे मिलुची also it is available in the as a medicinal form drug form as well है ना तार scientific name है calciferol
बॉडी रे से कैल्शियम रो अब्जॉर्प्शन को बढ़ाउची आ कैल्शियम इनटेक ता बढ़ेले हमें एज अ रिजल्ट ऑफ व्हिच कोन हमर बोन रो स्ट्रेंथ ता स्ट्रेंथनिंग होची बोन स्ट्रेंथ ता स्ट्रेंथनिंग होची है ना तो बोन डेंसिटी हमर लोअर हो जाउची ऑस्टियोपोरोसिस रो तो कैल्शियम और विटामिन डी इनटेक ता को बढ़ाई देबा हमें नेक्स्ट which of the following is the most important pre-operative nursing responsibility pre-operative nursing responsibility yes which of the following is the most important pre-operative nursing responsibility it is to verify the informed consent and checklist completion verify the informed consent and checklist completion operation पूर्वरु हमर ए कंसेंट और चेकलिस्ट गुडा को जहा जहा चेकलिस्ट दिया हिची से चेकलिस्ट गुडा सब फिल हिची ना नै से सब देखिबा कथा आ हमर कंसेंट हमर रहिबा मिलबा दरकार तापर जगे हम ऑपरेशन जाय next the client develops shallow respirations and decreased breath sounds on the second post operative day the nurse should suspect pulmonary embolism atelectasis pneumothorax pleural effusion कौन हबो yes sign in it is atelectasis रो माने होची collapse of the alveoli collapse of alveoli जा द्वारा कि हमर ऑपरेशन रो 48 आवर पर जनरली हमर ए सिम्पटम गुडा का देखा जाय पेशेंट्स मान को भितरे तो सेति पई बोली ए जिंसटा को हम गुड की जगी के रखिबा दरकार हैला जगी के रखिबा दरकार नेक्स्ट क्वेश्चन which finding is most indicative of the wound dehiscence serous drainage sudden gush of fluid with the sensation of something giving away mild erythema of the incision slight itching around the wound indicative of wound dehiscence कौन हबो it is swam sudden gush of fluid with the sensation of something giving away माने कोन संगे संगे कोन ओडे माने एमे हमर ये बॉडी माने ओडे सीरम रो या फिर फ्लूइड रो गशिंग हेकरी बाहर को किछ गोडा आसी वाला लागियो है ना नेक्स्ट a client receiving chemotherapy develop a WBC count of 1800 per mmq the nurse should prioritize which intervention encourage fresh fruits and vegetables, institute neutropenic precautions, increase the visitor access, administer the antipyretics prophylactically. Pneumothorax कौन लगी हो बनी माने कौन pneumothorax भल लक्षण देख लो एडा नॉर्मल WBC काउंट हमर कोन नॉर्मल WBC काउंट होचे हमर 4000 टू 11000 पर mmq 1800 अच्छी माने एरा हमर ल्यूकोपेनिया या फिर ल्यूकोसाइटोपेनिया कंडीशन को हमर ये डिनोट करूची हला तो ए केस रे हमर WBC काउंट कमुची बोली कहले मोर बॉडी रे इम्यून सेल्स कंसंट्रेशन मते कमुची जोडा कि हमर बॉडी को इंक्रीज कर दोची या फिर हमर रिस्क पई बोली इन्फेक्शन ता बढ़ी जाउची इन्फेक्शन रो रिस्क ता बढ़ी जाउची हला काहे कि इम्यून सेल हमर कम अछि इम्यून सेल्स कम अछि हला तो इंस्टीट्यूट द न्यूट्रोपेनिक प्रिकॉशंस को हमको देखिबा दरकार नेक्स्ट which skincare instruction is appropriate for a client undergoing external radiation therapy जो माने नो चंदी को स्किन केयर इंस्ट्रक्शन का सेरा नेबा से माने नेबा दरकार apply ice pack to the treated area wash the area gently and avoid rubbing apply talcum powder before each session expose the area to direct sunlight को तो हम एक्सपोज करबा कथा नहे हला बहुत सेंसिटिव ही जीवो से एरियाटा टाल्कम पाउडर हमर कोनोसी भी क्षेत्र रे हमर यूज करबा कथा नहे हला आइस पैक्स मध्ये हम एते माने सिवियर फॉर्म रे सतिगी सेंसिटिव एरिया रे हम से जिंसो को अप्लाई करिगी से जगह को डैमेज करिया कथा नहे we need to wash the area gently and avoid the rubbing है ना we need to wash the area gently and avoid rubbing next which type of anemia is most commonly associated with the chronic blood loss pernicious anemia iron deficiency anemia
aplastic anemia, sickle cell anemia. Yes. Common type of anemia. Anemia रो को केस रे anemia होची. RBC count जते बडे कमुची सते बडे anemia होची. हैला तो RBC count बढ़िले कोन हबो? RBC count बढ़िले से कंडीशन टा को पॉलीसिथेमिया बोली कुहा जाउची. पॉलीसिथेमिया बोली कुहा जाउची. हैला pernicious anemia को केस रे होची. It is caused due to the deficiency of vitamin B12. और B12 ना कौन हो? It is cyanocobalamin. Cyanocobalamin. है ना? Iron deficiency anemia is the most common form of anemia. है ना? Aplastic anemia रो माने कौन? Aplastic anemia रो माने कौन? Aplastic anemia माने when the bone marrow is not able to produce more new blood cells. सेडा को हमर aplastic anemia बोली कहै जाउची. सिकल सेल एनीमिया कोन होची? सिकल सेल एनीमिया रे हमर आरबीसी रो जो बाइकॉन्केव और राउंड शेप का आरबीसी दा सेडा हमर चेंज हो जाउची इनटू सिकल शेप. हला सिकल शेप रे एडा चेंज हो जाउची. तो ये जो सिकल शेप रे चेंज हो जाउची कोन पई होची? काहेकि ना हमर जो हीमोग्लोबिन रो जोड़ा कि हमर आयरन बेस्ड मॉलिक्यूल दा से प्रति मॉलिक्यूल रे हमर गोटे ग्लोबिन चेन लागि गेली. अल्फा चेन बीटा चेन रो 6th पोजीशन रे जते बेले ग्लूटामिक एसिड ता चेंज हो जाउची वालिन रे जोड़ा कि जी रा चेंज हो जाउची जी हला जी एडी हमर पॉइंट म्यूटेशन देखा जाउची. गोटे नाइट्रोजनस बेस रे जते बेले चेंज आसुची गोटे नाइट्रोजनस बेस रे जते बेले चेंज आसुची से कंडीशन टा को हमर पॉइंट म्यूटेशन बोली कहै जाउची. हला तो पॉइंट म्यूटेशन जो होची इट लीड्स टू द चेंज इन द शेप ऑफ द आरबीसी रो शेप रे चेंज आसीबा जो एडी आरबीसी रो सरफेस एरिया कमिला कोन हला सरफेस एरिया कमिला ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी मध्ये कमिला तापरे आ कोन हला ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी हला कोन लागि दिया हुए बट आयरन टैबलेट दिया हुए नि. फॉलिक एसिड मध्य गोटे प्रकार हमर विटामिन जोटा कि हमर आयरन रो कंसंट्रेशन ता बॉडी रे हमर स्टेबलाइज करके रखे. आयरन टैबलेट दिया जाउची. आयरन टैबलेट जते बेले दिया जाउची तते बेले आयरन रो डेफिशिएंसी जोगु हमर आरबी एनीमिया होची. ठीक अछि तो आयरन टैबलेट हमर डायरेक्टली दिया हिच. किंतु फॉलिक एसिड हमर सिकल सेल रे एथि में दिया होची काहे कि ना सिकल सेल रे मोर आयरन रो कंसंट्रेशन रे किछ प्रॉब्लम हे. आयरन रे लेवल मोर नॉर्मली अछि. एठी कोन प्रॉब्लम हे जे मोर जो प्रोटीन चेन ओडा कर प्रॉब्लम हे. तो से प्रोटीन चेन को स्टेबलाइज करके रखिबा पई बोली आ सी हमर सेडा मेंटेन कर रखिबा पई बोली फॉलिक एसिड दिया हला बी हो. ठीक अछि. तो एरिया हमर पॉइंट म्यूटेशन जो देखा जाउची सरफेस एरिया कमिला ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कमिला जा द्वारा कि ब्लड फ्लो रे ऑक्सीजन हमर कम देखा जाउची से कंडीशन टा को हमर हाइपोक्सिया कंडीशन बोली कहै जाउची. हला तो एरा हमर सिकल सेल एनीमिया बोली कहै जाउची एंड इट इज द ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर बाय द वे. ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर. ठीक अछि. ए सब जिंस हमर ये देखा जाय. नेक्स्ट during a blood transfusion, a client developed chills, fevers, and low back pain within 15 minutes. The nurse first action should be to slow the infusion rate, stop the transfusion, and keep the line open with normal saline. Administer antihistamines, continue transfusion, and monitor. जदि ब्लड ट्रांसफ्यूजन टाइम रे जदि गोटे पेशेंट ताको चिल फीवर एवडा सब आसुची 15 मिनिट देला भितरे एका हैला ताले हमें कोन करबा कंटिन्यू तो करबानी कि हां ज्वर खास थोड़ा जा होची हे थाउ हमें तो दे चलबा. एंटीहिस्टामाइन देगी हमर कोन से प्रकार लाभ होबनी.
जदि इन्फ्यूजन रेट को स्लो भी करबा ना ताहाले मध्ये हमर एते शीघ्र से सिम्पटम गुडा एते शो हबनी है ना हमें कौन करबा फर्स्ट तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन को बंद करिका बंद करिकी ना नॉर्मल सलाइन देबा आरंभ करबा है ना नॉर्मल सलाइन देबा आरंभ करबा स्टॉप द ट्रांसफ्यूजन एंड कीप द लाइन ओपन विथ द नॉर्मल सलाइन नेक्स्ट which laboratory finding is characteristic of disseminated intravascular coagulation DIC yes कौन it is prolonged PT and PTT prolonged PT and PTT prolonged PT रो माने कौन PT रो माने हैला prolonged prothrombin time आउ PPT रो माने हैला partial thromboplastin time ठीक अछि next according to the rule of nines what percentage of the total body surface is represented by one entire lower limb in an adult 9% 18% 27% 36% entire lower limb in an adult. Total surface area is represented by one entire lower limb in an adult. It is prothrombin time. Yes, Prabhashri. It is 18%. है ना 18%. 9% दा कौन entire head and neck. ठीक अच्छे entire head and neck. चलो next one. The Parkland formula for burn fluid resuscitation calculates the fluid requirement based on body weight and percent TBSA burn, age only, hemoglobin level, blood pressure only. कौन होगा? The Parkland formula for burn fluid resuscitation calculates the fluid requirement based on A. Yes, very good. Fluid body weight and percentage of TBSA burn. है ना percentage of TBSA burn. अब एटा को हमें किमी दे कैलकुलेट करछे fluid requirement is equals to 4 ml into body weight है ना 4 ml into body weight in kg and TBSA yes in kg yes in kg into TBSA percentage है ना then very good Suryanarayan next which of the following is an early compensatory sign of hypovolemic shock bradycardia tachycardia and cool clammy skin increased urine output flushed warm skin it is hypovolemic shock compensatory sign it is tachycardia and cool clammy skin next in septic shock the client's skin is typically cool and clammy warm and flushed in the early phase cyanotic and mottled only pale and dry कौन होगा in the septic shock रे client skin is typically warm and flushed in the early phase next the most effective mode of transmission in the HIV is through casual contact blood and blood products in airborne droplets contaminated water आउ food रो contamination रे हमर HIV infect होएनी transmit होएनी airborne रे मध्ये हमर होएनी हला casual contact रे touch करदेला physical touch it's okay हला बाकी हमर HIV जोडा को कि हमर human immunodeficiency virus बोली कहा जाउची ये हमर कोन करची it causes AIDS का फुल फॉर्म कोन acquired immunodeficiency syndrome
हैला ये हमरो ट्रांसमिट होची थ्रू सेक्सुअल कांटेक्ट एंड बॉडी फ्लूइड इट एक्चुअली ट्रांसमिट थ्रू बॉडी फ्लूइड तो बॉडी फ्लूइड भीतर सेक्सुअल कांटेक्ट आसी गला ब्लड ट्रांसफ्यूजन आसी गला इन्फेक्टेड सिरिंजेस आसी गला हैला इन्फेक्टेड नीडल्स आसी गले सब किछि हमर सेही भीतर इंक्लूडेड हि जदि हम देखिबा वर्ल्ड एड्स डे हमर केबे सेलिब्रेट होची वर्ल्ड एड्स डे is celebrated in December 1 आपको ऑर्गेनाइजेशन आपको कंट्रोल करछि नाटो हैला नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन हैला December 1 ये सब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जेबा which is the single most effective measure to prevent the spread of infection in a hospital setting single most effective measure to prevent the spread of infection in a hospital setting wearing gloves at all times hand hygiene isolation of all patients use of the antibiotics हमें किमिदी infection spread को हमें कंट्रोल करि परिबा हॉस्पिटल भीतर yes b अन्वेषा very good hand hygiene है ना hand hygiene हमें proper time to time proper sanitation maintain करिया दरकार hand wash करिया दरकार जा करे तो हमरो maintain हे परबो infection का spread हमरो रोकी हे परबो a client with a serum potassium level of 6.8 MEq per liter should be monitored closely for which ECG change flattened T wave peak T wave and widened QRS prolonged QT interval elevated ST segment only जदि आमे देखिबा ईसीजी रो सब ये कोडा हैला ईसीजी रो जदि देखिबा ग्राफ ता ताले ए टाइप रो रहउची ग्राफ हैला येला पी येला क्यू आर एस येला टी हैला तो पी वेव हमरो रिप्रेजेंट करची आर्टेरियल डिपोलराइजेशन हैला क्यू आर एस वेव हमरो रिप्रेजेंट करची बा क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स ये हमारा रिप्रेजेंट करची वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन है ना आउ टी वेव रिप्रेजेंट करची वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन आउ जते बेले बॉडी रे पोटेशियम लेवल ता हमर एतिकी जाय जाउची से केस रे टी वेव ता पीक हेगी क्यूआरएस वेव ता वाइडन हे जिवो हैला क्यूआरएस ता वाइडन हे जिवो आ जते बेले हमरो ए लेवल रे देखा जाउची माने हाइपर पोटेशियम लेवल अधिका अछि hyperkalemia yes remember it is because of hyperkalemia lipsa very good 2041 a client with a serum sodium level of 118 MEq per liter may present with muscle rigidity confusion in seizures polyuria hypertension हमरो सोडियम लेवल रो नॉर्मल रेंज रा केते 135 to 145 हैला it will lead to confusion and seizures जेहेतु कम ही सोडियम लेवल कमी जाई सोडियम लेवल कमिले कोन कहते इट इज hyponatremia then ठीक अछि yes question number 42 the earliest symptom of open angle glaucoma is sudden severe eye pain gradual loss of peripheral vision complete blindness double vision earliest sign of the open angle glaucoma it will lead to धीरे धीरे साइड आडू हमर विजन ना हमर अफेक्ट हे जिवो हैला gradual loss of peripheral vision next following cataract surgery the nurse should instruct the client to avoid wearing a protective eye shield at night cataract surgery हेची बोली कहले protective eye shield तो निहाती पिंधिबा दरकार हैला तो एडा को अवॉइड टाइम करबा हम एडा हबनी ऑप्शन bending straining and heavy lifting yes bend करबनी strain करबनी निज आखि को strain दबनी heavy lifting देले मध्ये हमर ब्रेन ऊपर प्रेशर पडिले बॉडी रो मसल्स ऊपर प्रेशर पडले मध्ये से हमर अफेक्ट करि पारे हैला using prescribed eye drops avoid थोड़ी करिवो सेटा तो बने करिवो निहाती sleeping on the non operated side yes एडा को भी करिवो तो एडा हमर अवॉइड करबानी ए सब जिंस उडा को करिवो ए सब जिंसडा इट इज recommended
ए जिनसटा आमे करिवा कथा नुहे ए जिनसटा करिवा कथा नुहे नेक्स्ट which nursing instruction is appropriate for a client with psoriasis apply topical treatment as prescribed and avoid scratching expose lesions to prolonged direct sunlight avoid all moisturizers keep the skin completely dry at all times appropriate कौन appropriate टॉपिकल ट्रीटमेंट को अप्लाई करिवो ऊपर ऊपर जोड़ा प्रेस्क्राइब करा हिचे और स्क्रैचिंग को अवॉइड हैला स्क्रैचिंग अवॉइड करिवो सेठी से लेजियन को डायरेक्ट सनलाइट एक्सपोज करिवो बोली कहले सेंसिटिव एरिया रा से इन्फेक्शन ता बढ़ेबो मॉइस्चराइजर यूज करिवो सब गुडा को सब मॉइस्चराइजर को हमें अच्छा अवॉइड ऑल मॉइस्चराइजर सब मॉइस्चराइजर को हमें अवॉइड करि परिबानी जो जिनसरा प्रेस्क्राइब करा हिचे सेटा को हमें अप्लाई करिवो कीप द स्किन कंप्लीटली ड्राई एट ऑल टाइम्स ना सब ड्राई करिके मत रखिया नै किछि किछि जोड़ा प्रेस्क्राइब्ड मॉइस्चराइजर सेटा को हमें यूज करिया a client presents with pain that begins periumbilically and localizes to the right lower quadrant as per the McBurney's point. The nurse should suspect cholecystitis, appendicitis, diverticulitis, pancreatitis. Periumbilically सेटा सी देखुची हला periumbilically बोली कहले हमर belly button around the belly button ठीक अछि periumbilically बोली कहले around the belly button तो एडी जदि जणे से माने पेन दा जनरेट होची ताले सेटा कहार सिम्पटम हे परिबो appendicitis रो सिम्पटम दा हे परिबो appendicitis रो माने हैला inflammation of appendix inflammation of appendix then B next 46 which clinical finding is most suggestive of deep vein thrombosis most suggestive of the deep vein thrombosis deep vein thrombosis जदि हेची को सिम्पटम दा देखि के हमें सस्पेक्ट करि परिबा कि अच्छा ठीक अछि एबे एडा thrombosis रो कुछ सिम्पटम तो कोडा को देखि जानि परिबा unilateral leg swelling warmth and tenderness unilateral leg swelling warmth and tenderness these are the few clinical findings which is suggestive for deep vein thrombosis next a client with a diagnosed pulmonary embolism suddenly developed dyspnea chest pain and hemoptysis the nurse priority action is to place the client in a supine position administer oxygen and notify the physician immediately encourage ambulation give the oral fluids yes कौन करबा ए केस रे पेन dyspnea माने शॉर्टनेस इन द ब्रेथ चेस्ट पेन होची हैला तो से केस रे फर्स्ट तो ऑक्सीजन दबो सुपाइन पोजीशन रे तो लगेबनी एम्बुलेशन करिवनी ओरल फ्लूइड्स पे की किछ लाभ नै एडमिनिस्टर ऑडिबो ऑक्सीजन आ संगे संगे फिजिशियन व डॉक्टर को डाकिबो हैला OU8 प्रिपरेशन कितना टाइम करूंगी ओनली एमसीक्यू सेशन रे एमसीक्यू अधिकार अधिकार सॉल्व करो हैला एमसीक्यू अधिकार अधिकार सॉल्व करो थ्योरी जो एमसीक्यू सॉल्व करला टाइम रे जो जगह रे तुमरा थ्योरी रे लैग रहउची बा थ्योरी बुझा पडू नाही से केस रे थ्योरी को तापरे से क्वेश्चन रो थ्योरी रो कवर करबो ट्राई करो तमे जदी दिन को 6 घंटा पढुचो बोली कहली से 3 घंटा केवल एमसीक्यू ही सॉल्व करो काहेकि एमसीक्यू जते तमे वाइड रेंज रे करबो और नॉट ओनली दैट एमसीक्यू जदी तमे एक गोटे क्वेश्चन अछि तार चारटा ऑप्शन अछि एक क्वेश्चन रो तमे जानलो जे ए क्वेश्चन दा ए ऑप्शन दा होची करेक्ट हैला तार आरो तीनटा ऑप्शन काहे की करेक्ट हेलानी से जिनसटा को मते बुझियाउ चेष्टा करो हैला से जिनसटा बुझियाउ चेष्टा करो आ ए सब ऑप्शन सुडा गो जो ए ऑप्शन दा जो भूल हैला ए ऑप्शन को नै गिरा कोन क्वेश्चन हे परिबो हैला सेटा को मते देखियाउ चेष्टा करो जा द्वारा कि तमरो टी ओवरऑल आईडिया हे हैला ओवरऑल आईडिया हे जिवो एज अ रिजल्ट ऑफ व्हिच तमरो गोटे क्वेश्चन संगे दि तीनटा क्वेश्चन एका संगे सॉल्व हो गला हैला दि तीनटा क्वेश्चन तमे एका संगे सॉल्व करलो तो तमे जदी दिन को 50 टा क्वेश्चन भी सॉल्व करछो ना तमे एतिकी अश्योर ए टाइप रे जदी तमे एमसीक्यू सॉल्व करछो ताले यू बी श्योर अबाउट इट कि तमे 50 टा नुहे 100 टा 150 टा एमसीक्यू सॉल्व करछो हैला तो सेते मैं बोली एमसीक्यू सॉल्विंग इज द बेस्ट मेथड टू क्रैक और टू कंप्लीट द सिलेबस इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम हैला और जा द्वारा कि तमरा आ अलगारे एमसीक्यू प्रिपेयर करियो पड़िबो हैला अलगारे एमसीक्यू प्रिपेयर करियो पड़िबो नेक्स्ट
48. Nephrotic syndrome is primarily characterized by hypertension, hematuria, oliguria, massive proteinuria, hypoalbuminemia, and generalized edema, polyuria and glucosuria, hyperkalemia, and metabolic acidosis. Nephrotic syndrome is primarily characterized by nephrotic syndrome. It is characterized by massive proteinuria, hypoalbuminemia, and generalized edema. Hello? Yes. 49. During adult CPR, the recommended compression to ventilation ratio for a single rescuer is कौन हबो केतरा चेस्ट कंप्रेशन दबो केतरा वेंट्रिकुलर रेशियो वेंटिलेशन दबो हला केतरा ब्रेथ दबो हला इट इज 30:2 30:2 बी प्रियंका सौदामिनी स्वयं सुरेखा yes. Which of the following is the correct hand position for chest compression in an adult CPR? Which of the following is the correct hand position for the chest compression in adult CPR? It is B. Pranjyoti, Priyanka. Yes. B. Lower half of the sternum. Lower half of the sternum. ठीक अछि? With this, हमारा आज रा session 80 complete होची. But before completing the session, मु तुमको गोटे क्वेश्चन देकी जाउची. जोटार की आंसर तमे मते कमेंट सेक्शन रे लिखि जणेबो. आ आज रा क्लास केमिति लागले सेटा मते कमेंट सेक्शन रे निहाती. हैला तो क्वेश्चन को नोट डाउन कर दियो. देखो इंजुरी हैला जदी गोटे साइट रे से साइट रे थ्रोम्बोप्लास्टिन गोटे कंपोनेंट के रिलीज होची. थ्रोम्बोप्लास्टिन कंपोनेंट रिलीज करिगिरी ऑप्शन ए से गोटे एंजाइम रिलीज होची. से एंजाइम रो नाडा कोन? से एंजाइम रो प्रेजेंस रे प्रोथ्रोम्बिन ओडा को कन्वर्ट होची. बी एडा को सॉल्व करबो हैला. आ एडा वंस मोर फॉर्म हैला परे फिब्रिनोजेन मोर कन्वर्ट होची सी ओडा हैला. तो मते ए बी सी ए तीनटा को फिल करबो. एडा होची हमर ब्लड क्लॉटिंग रो इवेंट ता हैला. एडा होची हमर ब्लड क्लॉटिंग रो इवेंट ता कैस्केड ऑफ प्रोसेस जोडा चली छी हैला. तो ए और चारटा जगह ऑप्शन हैला ए बी सी नंबरिंग करिकी प्रॉपर्ली कमेंट सेक्शन रे लिखिकी जणेबो. आउ आमे देखाबा पुनी आउ गुडे नुवा सेशन रे जोडा रे की आमे आउ किछिटा नुवा क्वेश्चंस रो मते डिस्कशन करिमा. तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल एंड पुट ऑन द बेल आइकन. आउ सेशन जदि भलो लागे ताहले निहाती लाइक करिबा और कमेंट सेक्शन रे निश्चय जणेबो. थैंक यू सो मच एवरीवन. सी यू नेक्स्ट टाइम. जय जगन्नाथ.